Hello everyone and welcome back to Maths with Dhaval. Let us start our new chapter, chapter number 5, Introduction to Euclid's Geometry. Geometry is derived from the Greek word which means geo means earth and metron means to measure. Roughly, we can say that geometry means earth measurement. Let us see history of geometry. In present time, we see different types of use of geometry. But in ancient time, Egypt, India, Greece, China, Babylonia also use geometry in various fields. इजिप्ट, इंडिया, चाइना, बेबीलोनिया इन सब ने जियोमेट्री का अच्छा खासा प्रैक्टिकल यूज़ किया। अगर हम सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन की बात की तो ग्रीक सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन हु एक्सप्लेन सिस्टमेटिकली जियोमेट्री। हमने अभी अभी देखा कि ग्रीक सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन हु एक्सप्लेन systematic geometry. That's why we got a maximum mathematician from a Greece like Thales, Pythagoras, Heron and Euclid. If we talk about famous mathematician Thales, actually dear friends, Thales was first prove that a circle is bisect by its diameter. Now, if we discuss about his student Pythagoras, we know about him. He proved so many concepts and properties in geometry. For example, Pythagoras theorem. Actually, dear friends, Thales, Pythagoras and Heron proved so many concepts, but it was not arranged properly. So, Euclid was that man who arranged properly concept and properties and gave its name elements. Euclid divided all these concepts and properties in 13 chapters. Let us start to link Euclid's concept with modern geometry in this chapter. Now, if we discuss about his student Pythagoras, we know about him. He proved so many concepts and properties in geometry. For example, Pythagoras theorem. Actually, dear friends, Thales, Pythagoras and Heron proved so many concepts, but it was not arranged properly. So, Euclid was that man who arranged properly concept and properties and gave its name elements. Euclid divided all these concepts and properties in 13 chapters. Let us start to link Euclid's concept with modern geometry in this chapter. Let us see Euclid's definitions. Definition 1. A point is that which has no part. Means point का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है. जनरली लोगों को डाउट रहता है कि डॉट और पॉइंट्स दोनों एक ही है, लेकिन अगर हम कोई भी डॉट रखते हैं तो उसके भी कुछ ना कुछ डायमेंशन रहते हैं. दैट्स वाई पॉइंट हैज़ नो एनी काइंड ऑफ डायमेंशंस. नंबर 2. अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ. मीन्स लाइन की सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है, ब्रेथ होती नहीं है. इफ लाइन हैव अ ब्रेथ, देन वी कैन से दैट इज नॉट अ लाइन बट इट्स अ रेक्टेंगल. Third definition. The end of a line are points. Look at this line AB. Here, both ends are point A and point B. Next definition. A straight line is a line which lies evenly
with the point on itself. For example, look at this figure. All the points are lies evenly. So we can say that this one is a straight line. Next definition. A surface is that which has length and breadth only. मतलब कि जिसके भी पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होगी उनको ही हम बोलेंगे सरफेसिस। यहाँ पर याद रखिएगा सरफेसिस होने के लिए हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल प्लेग्राउंड, फार्म, गार्डन, इन सब को जिसके भी पास लेंथ एंड ब्रेथ है उनको हम सरफेसिस बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन, द एज ऑफ सरफेस आर लाइन्स। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस रेक्टेंगुलर सरफेस। यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर सरफेस की एज ए एंड बी है, सो हम उनको लाइन बोल सकते हैं। लास्ट डेफिनेशन, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस which lies evenly with the straight line on itself. Look at here. Here, a surface lies evenly with the straight line on itself. That's why we can say that this one is a plane surface.